Good afternoon, बच्चों. In today's class, I'm going to discuss the last basis of partners capital retirement questions. Whenever a partner retires from the firm, we had studied that how the settlement will be there. The settlement will be like full payment. The settlement will be like no payment, and sometimes settlement will be partial. Partial means we are giving a part payment and the rest part we are transferring in the loan account of that particular person. So in today's class, we will solve that type of question also, so I can complete the whole retirement chapter. But in your book retirement, adjustment of capital, interest on partners loan, that all are given, but you not need to worry about that because now it is not in your syllabus. Adjustment of partners capital, preparation of balance sheet, that is not there in your syllabus. So the normal question only without adjustment of capital you have to be solved. You have to be solved in your notebook from your book. So without wasting the time, I'm just taking out the question, and now you guys have to be practice with me today. So just give me some time to bring. So बच्चा, this question you have to solve. चलो जी, first we understand the question. Pankaj, Neeraj and Saurabh are partner, sharing profit in the ratio 3:2. Okay बच्चा, Pankaj, Naresh and Saurabh are partners, sharing profit in the ratio 3:2. 3:2:1 is your old ratio. Who retired? Naresh retired, okay, from the firm due to his illness. On the date of balance sheet of the firm was as follow. अब बच्चा, you are knowing that a partner can retire by his or her choice, and that is what retirement of partnership at will. Calculation of new ratio, whether it is retirement, whether it is admission, treatment of goodwill, whether it is admission, whether it is retirement, partners capital in the case of admission, in the case of retirement, and revaluation. This much topic you have to cover from both chapters. So what things are there, what we can divide in this, in the partner? General reserve. General reserve will be distributed between the partners, old ratio. Old partners, old ratio. Okay बच्चा. Next, any other particular accumulated loss or accumulated profit is given? No. Any other accumulated profit or accumulated loss is not given. So बच्चा, first we will prepare the revaluation account for the sale. First we will prepare the revaluation account for the sale. तो चलो जी, we will prepare the revaluation account बच्चा. How so? You just see. We will open the revaluation account column, and this side बच्चा revaluation account, debit side is there, credit side is there. Debit side is assets minus liability plus, assets plus liability minus. अब now you see बच्चा,
You just tell me in the comment box that what things will transfer in the debit side. In revaluation account, what things we will transfer in the debit side? Tell me in the comment box. You have 2 minutes. What thing we will transfer in the debit side? Stock is overvalued by 10%. When anything is overvalued, we have to decrease that. We have to decrease that. So बच्चा, you just see here the concept. Stock value is overvalued by 10%. So what is the stock value बच्चा? 22,000. 22,000. अब how we can find out that what was the original value of stock? Because if we are not getting the original value of stock, we cannot solve that. So बच्चा, very simple. देखो, assume that if stock original value is 100, overvalued is 10%, means 10 rupees. So the final overvalued will be 110. तो आप बना सकते हो बच्चा कि when 110 is the overvalued amount, then original value is 100. So when 22,000 is the overvalued amount, then original will be 100 divided by 110 into 22,000, and it will be 20,000. ठीक है जी, it will be 20,000. So 20,000 was the original value, and the value which had recorded is in the question. It is recorded how much बच्चा? It is recorded sir 22,000. So stock is overvalued by 2,000. समझो बच्चा, स्टॉक की वैल्यू 22,000 रुपीज दी हुई है. स्टॉक वैल्यू इज हाउ मच? 22,000. जबकि स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू हमने निकाली कितनी? 20,000. तो स्टॉक ओवरवैल्यूड कितने से है? 2,000 से. तो वी विल राइट डाउन हियर टू स्टॉक 2,000 rupees. Next one is premises are undervalued by 20%. तो बच्चा उसी तरह premises का भी निकालिए. चलिए निकाल के बताइए. तो premises की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? What is the original value of premises? देखो premises is 80,000. तो उसी तरह बच्चा निकालेंगे सेम. देखो premises की ओरिजिनल वैल्यू इस टाइम बच्चा, इस टाइम वैल्यू कितनी लिखी है? 80,000, which is undervalued and undervalued by 20%. तो मान लो जी उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 100. Now it is 20 rupees undervalued. So after undervalued price is 80. After undervalued price is 80. तो आप कह सकते हो जी 80 undervalued price, original value 100. So when 80,000 is the undervalued price, then it will be 100 by 80 into 80,000. सॉल्व कर देंगे बच्चा, आ जाएगा कितना आपका? 1 लाख. तो भाई कितने से बढ़ाना है उसको? ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख शुड बी, और है कितनी बच्चा? वो 80,000. तो इट मीन्स premises increase by 20,000. So by premises 20,000. नेक्स्ट देखो भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेट 5% ऑन डेटर्स. तो बच्चा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स? 6,000. एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज 5%. तो 6,000 5% विल बी कमिंग 300. एंड ऑलरेडी हाउ मच इट इज देयर? 400 रुपीज. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ऑलरेडी हाउ मच बच्चा? 400 rupees. So our provision for doubtful debts decrease, and when it is decreased बच्चा, it will be transferred in the credit side by provision for doubtful debts, 100 rupees. Next,
फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड 4100. करेक्ट, एक नया प्रोविजन आ गया, एक नई लाइबिलिटी. And when a new liability is there, that new liability will increase the liability. That's why here it will be two legal damage claim 4100. And it is written, bacha, one more, furniture is to be brought up. Furniture is to be brought up to 45,000. So furniture value are just 41,000. Furniture value is just how much, bacha? 41,000. But now it should be increased to 45,000. So furniture increased by how much, bacha? Furniture increased by 4,000. So buy furniture 4,000. Okay, bacha. So दिस इज वॉट रीवैल्यूएशन. तो जब भी लिखा हो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इफ अमाउंट इज गिवन देन तो इट्स ओके, डायरेक्टली अमाउंट वी विल एडजस्ट. बट इफ परसेंटेज इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस. अगर ओवर वैल्यूड है तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, अगर अंडर वैल्यूड है तो ओरिजिनल प्राइस क्या था. एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द ओरिजिनल प्राइस यू विल फाइंड आउट दैट इट शुड बी डिक्रीज और इट शुड बी इंक्रीज. So now you find out 20 plus 4, 24,100. 24,100. So 4 to 6,100. 24,100 minus 6,100. How much? 24,100 minus 6,100. How much it will come? 18,000. And this 18,000 will be distributed to profit transfer to कौन भाई? पंकज, नरेश and Saurabh. And in what ratio, बच्चा? तो ratio is already given 3:1. So this 18,000 will be divided in 3:1. So it will be coming how much, बच्चा? It will come 9,000. Then 6,000 and then 3,000. So this is the way how we make the revaluation of this particular question. So I hope it is clear to you. Please go and watch this particular question for 2 minutes with solution, and if you have any problem, please ask. If you have any problem, please ask. Please ask, bachcha. Any problem? You just read the additional information. Then you read the you see the solution, and if you feel anywhere so this particular amount not understand, then I will explain you. So please ask that. And if it is clear, so tell me in the comment box it is clear. And if revaluation everything is clear to you, then your like button is waiting so I can understand. चलो जी, concept clear. Again I am telling you, इसको एक बार मैं फिर से बता दूं. If anything is overvalued, undervalued, amount is given, directly amount will be placed in revaluation. But if overvalued, undervalued is given in the percentage form, then you have to find out the original value. और original value के लिए बच्चा, the method what I had defined, please follow the same method. कि मान लो जी उसकी वैल्यू कितनी है ओरिजिनल 100 एंड ओवरवैल्यूड इज बाय 10. तो ओवरवैल्यूड कितनी जाएगी बच्चा? ओवरवैल्यूड विल बी ऐड 100 प्लस 10 इक्वल टू 110. अब 110 है तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है. जब 22,000 होगी तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? 20,000. तो 22 minus 20, it is overvalued by 2,000, so it will record it 2,000. चलो, तो it is what? Revaluation account. Write down the revaluation amount.
Now we will make the partners capital. So let me make the partners capital format first. And after that you guys tell me. हाँ, so particular पंकज, नरेश, सौरभ, पंकज, नरेश, सौरभ. बच्चा we will write down here by balance BD. So by balance BD, how much? First we have to write down the amount. So amount of Pankaj is 46,000. Amount of Naresh is 30,000. Amount of Saurabh is 20,000. Immediately after that, we have to write down the revaluation profit or loss. So we have revaluation what? Profit. Revaluation profit of 9,000, 6,000 and 3,000. After the revaluation profit, immediately we have to distribute whatever the accumulated loss, accumulated profit we have. So we have a accumulated, you can say undistributed profit in the form of general reserve. So in the form of general reserve, it is how much, bacha? 12,000. And that 12,000 will be distributed in the ratio 3:1. So we will write down here by general reserve, and this 12,000 will be distributed in the ratio 3:1. So it will come how much, bacha? 6,000, 4,000 and 2,000. Now any more? Yes sir. What बच्चा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सर. तो चलो जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं बच्चा. देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. So whose goodwill is given in the question? Any particular person goodwill is given in the question? Yeah, goodwill of the firm is given. Goodwill of the firm is given, that is what? 42,000. So treatment of goodwill will be like this, bacha. Firm goodwill is 42,000. So we want the goodwill of whom? We want the goodwill of retiring partner. We want the goodwill of retiring partner, and who is retiring partner? Naresh. So Naresh share of goodwill. Naresh share of goodwill. And Naresh share of goodwill, bacha, 42,000 is the firm one into 42,000 into Naresh share, bacha. Naresh share is 2/6. So 2/6. How much it will come? 42,000 to 2/6. How much it will come? 14,000. अब बच्चा this 14,000 is the Naresh share goodwill. And who will give this goodwill? Who will give this goodwill? Gaining partner will give. Gaining partner will give. तो बच्चा in the question you see new ratio is there. Yes sir, new ratio is there. So whenever in the question new ratio is there, then we have to find out the gaining ratio by the formula new share minus old share. New share minus old share. अब बच्चा new share minus old share. So what is the new share? The new share you can see here 5:1. So what is whoso partner is remain in the business? That is Pankaj and Saurabh. So gaining ratio of Pankaj and gaining ratio of Saurabh. तो पहले बार इनके न्यू शेयर्स लिख दो 5/6, 1/6, 5/6, 1/6 एंड बच्चा
5/6, 1/6 और भाई ओल्ड रेशियो इज 3:1, तो इनके हो जाएंगे बच्चा 3/6 माइनस और इनके माइनस हो जाएंगे 1/6। सो 5 - 5/6 - 3/6 इक्वल टू 2/6 और तो ये तो बच्चा 0/6। It means Saurabh is not sacrificing, Saurabh is not gaining the total share gained by Pankaj. So who will give the goodwill to Naresh? Total goodwill given by Pankaj. अब बच्चा गुडविल का मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया था रिकॉर्डिंग का कि both side partners capital have both side. One side is debit, one side is credit. Debit side is known as minus side and credit side is known as plus side. तो जो बंदा गुडविल की अमाउंट पा रहा है, जो बंदा गुडविल की अमाउंट क्या कर रहा है बच्चा, जो बंदा गुडविल की अमाउंट पा रहा है, the person who is receiving the goodwill, that capital will be increased. So here we will write down whose capital is increasing बच्चा, Naresh capital is increasing. And increased by which how much amount of goodwill? 14,000. And who is giving this goodwill? Pankaj sir. So by Pankaj. And similarly बच्चा Pankaj good share capital will decrease because Pankaj is giving the goodwill amount. And who is receiving the goodwill from Pankaj बच्चा? To Naresh. ये लिख लिया जी, ये लिख लिया। तो इसमें बच्चा कोई प्रॉब्लम प्लीज टेल, एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। बाय बैलेंस बीडी ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल 42,000 पूरे फर्म की है, उसका 1/3 निकाल लिया, आ गया 14,000 एंड दैट 14,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो में ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग, सो ऑल दैट गुडविल विल बी गिवन बाय दैट पार्टनर। तो नरेश इज रिसीविंग द गुडविल, so capital credit plus, and who is giving the goodwill? Pankaj. And when Pankaj is giving goodwill, so his capital will decrease, so 14,000 and here it will be to Naresh 14,000. Now bachcha you find out the balance of each partner. सो भाई चलो करते हैं इसका 23-25,000, इसका हो जाएगा 914,650 961,000 और इसका हो जाएगा बच्चा 54,000। बोथ विल बी रिटन 61, 54 and 25. Before writing down the balance CD, we will settle the account of retiring partner. अब बच्चा अकाउंट सेटल कैसे होगा? तो देखो जरा बच्चा, कह रहे हैं 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखो बच्चा कह रहा है 26,000 तो पहले लोन में ट्रांसफर कर दो। चलो हम लोग भी पहले लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर टू नरेश लोन। कितना ट्रांसफर कर दिया? 26,000। एंड कह रहा जी एंड बैलेंस भी पेड थ्रू बैंक। कह रहा है बैलेंस किससे पे करना है भाई? बैंक से पे करना है। चलो बच्चा बैंक से पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे सर? तो 54 में से 26 माइनस कर दो, तो बच्चे का कितना बच्चा? 28। तो इट इज पेड बाय बैंक, सो टू बैंक 28,000। और बच्चा जिनके बैलेंस सीडी बच्चे उनके बैलेंस सीडी लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। तो 61 में से 14 माइनस कर दिया, कितना बचा? 47,000 और 25 तो 25,000 बचा हुआ है। तो ये काम करेंगे बच्चा। तो इस क्वेश्चन में पार्शियल क्या था कि एक पार्ट 26,000 ट्रांसफर टू लोन एंड एडिशनल पार्ट ऑफ 28,000 इज पेड। 28,000 इज पेड इन द चेक टू द पार्टनर। और कह रहा है कि अगर फर्म के पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यू कैन सी हियर द फर्म हैव ओनली 7,600, सो हाउ फर्म कैन पे 28,000? तो उसके लिए भी ऑप्शन दे दिया
कि फर्म कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लो लेकिन पेमेंट उसको तुरंत का तुरंत करना है। अब आओ जी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। If anyone having any problem, you can ask. Now, balance sheet बच्चा, balance sheet as on 31st March 2018. 31st March 2018. This side liability and this side assets is there. और एक चलते हैं ले लेके आराम से। जनरल रिजर्व सर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, छोड़ दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स बच्चा कितना 28,000, कोई चेंज है नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंज है बच्चा, तो बिल्स पेबल में भी सर नो चेंज। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज, उसमें भी चेंज नहीं है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, हाँ सर इसमें चेंज है। क्या चेंज है भाई देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज टू बी मेड फॉर 4100, ठीक है। नया प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज कितना आ गया बेटा, फर्दर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज 4100, तो 4100 पुराना, 6000 नया, टोटल कितना हो गया बच्चा लीगल डैमेज, लीगल डैमेज प्रोविजन टोटल विल बी 6000 प्लस 4100 इक्वल टू 10,100। ओके, एंड after that two things are there which will transfer in the loan. How much amount of loan we transfer to the new partner? तो we had transfer how much loan बच्चा, 26,000 का तो लोन ट्रांसफर किया है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 26,000, 26,000 is the loan of Naresh. तो loan will be transferred in liability because it is future payment, तो Naresh loan 26,000 and last we will transfer capital। तो कैपिटल किसके किसके भाई, पंकज के एंड सौरभ के। एंड हाउ मच कैपिटल बैलेंस इज देयर, तो आपको पता था मैंने लिखवाया हुआ है। कितना कितना बैलेंस बच्चा, एक का 47,000 और एक बंदे का था 25,000। 61 था, 61 से 40 माइनस करके 47,000 एंड 25,000। अब इसका निकालेंगे टोटल, लेकिन रुक जाओ भाई, एक चीज छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, कह रहा था बच्चा कि जो 28,000 की आपने पेमेंट की है, जो आपने 28,000 की पेमेंट की है, किसको पेमेंट की है सर, नए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, 28,000 का तो पेमेंट कर दिया उसको। आपके पास था कितना बैंक, 7,600, तो कितना आपका एक्स्ट्रा आपने बैंक से लिया है, 10 में 6 4, बच्चा इतना पैसा आपने बैंक से और लिया हुआ है। 28,000 you had paid to the retiring partner and out of that you have only 7,600, so rest balance you had taken from the bank as a loan, and loan will be recorded as a bank loan because it is short term loan, bank loan 20,400. Now you will find out the total of this side as 1,70,700, 1,70,700। ओके बच्चा, चलो जी, कम टू द एसेट साइड। अब भाई यू हैड एडजस्टेड योर बैंक, सो योर बैंक ओवर डेटर्स, वी विल राइट डाउन द फर्स्ट कॉलम डेटर्स। डेटर्स कितने बच्चे, 6,000 माइनस प्रोविजन, तो भाई प्रोविजन उसमें कितना है भाई, डाउटफुल डेब्ट्स 5%, 300 बच्चा, तो इट विल बी 5,700। आफ्टर दैट स्टॉक, तो स्टॉक बच्चा 2000 से डिक्रीज हो गया था, ओवर वैल्यूड, तो अभी स्टॉक की न्यू वैल्यू इज 20,000।
Furniture is valued at 45,000. And premises 80,000 था बच्चा, undervalued. 20,000 we increase in revaluation, so now it will be 1 lakh rupees. And the total of this side will be also coming 1,70,700. तो बच्चा you can see here. So this is the question, how we can solve the question of mixed one when payment and loan both is there. So I hope this question is clear to you. If you have any doubt, any problem, please ask. ठीक है, in the comment box I will try to solve. Provision for legal damage is a fixed liability, that's why it is not distributed in the partners as we distributed the general reserve. Okay बच्चा, so thank you. Do the practice of all the question of retirement chapter from DK Goel except adjustment of capital. One more thing is there कि सर इसका क्या होगा, जाते जाते सर ये तो बता दो. How, which one बच्चा? तो सर just a minute भाई, इस चीज का सर 12% per annum interest. तो बच्चा when in the question it will be there to open the interest on loan, a partner's loan account, then you will adjust this. But in your syllabus it is not there, so not need to worry. So thank you very much for your kind support. Thank you everyone.